ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। पूरी लाइन में discussing. What? वो जिस पे चर्चा करने लगी पार्लियामेंट में वो बिल्स एंड ऑल. तो करंट अफेयर चल रहे हैं तुम लोगों के? Good. How are you, Srinidhi? I'm fine, ma'am. Thank you. Happy to see your face. ओके, नया टॉपिक शुरू किया था हमने, आज से कर रहे हैं ना सोल्व. Did I give you homework yesterday? The questions? I think I gave one question to you. I didn't? So how's the preparation going? Better than yesterday? आज कितने घंटे पढ़ी आप? 2 hours completed. नहीं, क्लास इंक्लूड नहीं करनी है. Self study I'm talking about. You, Harshit? Because schedule maintain करना शुरू करो बेटा. How are your papers, Srinidhi? Yes, ma'am. How was your exam? My exam. You took leave for exams, right? Yes, ma'am. It was completed 2 weeks ago. Midsem was over 2 weeks. More than 2 weeks ago. Okay. And I did well. Okay. So what is soul? What is it? Which exists in everything. What everything? So my soul exists in your soul? Then? Everything has got its particular own soul. Hmm. And when we consider the rules of Buddhism, Hmm. not Buddhism, I guess Jainism. Jainism says that every living thing and non-living thing has an entity called soul. Okay. Inner consciousness of a body. What did you say, Harshit? Which has present in everything. Which is present in everything. And what everything did you say? Everything which is living, either living or not living. This is according to Jainism. Okay. Yes. Trinidhi. Yes, ma'am. Maybe soul is a concept that it is believed to be our consciousness that is present in us, that it exists even without our material body. It continues its existence. Okay. Saptarishi? Yes, ma'am. So, soul is our inner consciousness or inner pure consciousness that actually connects with the ultimate reality. That Atman. Basically, it is the Atman which actually, which is the reason why we feel ourselves distant from Brahma, the ultimate reality. When the Atman actually
understands its importance and understands it is not different from the ultimate reality, then only we can get liberation. So soul is the pathway toward liberation if we understand the true reality of soul and how it works. We can also say that soul is an energy which gives life to the body. So soul and body are two different parts according to you. Anything else? कुछ और दिमाग में चल रहा हो? Anything else? Okay, so when we talk about soul, it is part of your body. Okay, as Arya also said that these are two different things that we have. Anna, if we know soul is, now what is body? Okay, so we can say that body is something temporary, something that changes. Anna, so Harshit, who was 5 years old, is not the same Harshit who is 22 or 23, right? You are also changed, right? The same goes with this as well, right? So it's like that you are changing clothes, but you are the same. Okay, you were wearing something else yesterday, but now you are wearing something else, right? So it's the same is here also. So body is what? They are the clothes we are talking about, right? And soul is what? It is the real you we are talking about. Okay, समझ आया? Okay. When we talk about this concept now, you'll find this concept in many Indian philosophies, okay, where they do not consider this as one aspect. These are like two different things. Okay, soul is something else, body is something else, right? Many philosophers consider body to be materialistic. कुछ लोग उसको consider करते भी नहीं है, right? When we talk about soul, this is, some will say that this is also temporary, and some will say that this is permanent, and it basically moves from one body to the another. ठीक है, पैरिश हमारी सिर्फ बॉडी होती है, बट व्हेन इट कम्स टू सोल इट इज परमानेंट दैट वी हैव. ठीक है, तो ऐसे इंडियन फिलॉसफीज को लेकर चलती है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोल, सोल इज आत्मा, राइट? सो इट इज लाइक अटर्नल, इट इज इनविजिबल एंड इट इज कॉन्शियस. ठीक है, क्या क्या है? यस, ठीक है. So eternal because it will pass from one body to another, right? Invisible because we cannot see. Conscious because we act according to this. Okay, so we have these three parts of soul. Do you agree with this? Srinidhi, Sapneshi, do you agree with this? Not totally. I don't totally. How you criticize this? Well, the main aspect is that we can't see soul, and we do. Though soul can exist or can't exist, it actually can't be proved using logic and reason. So I can't totally accept this idea that there is soul who is eternal, invisible, as well as it actually change body and something like that. Like as said in Gita, that soul is like the pure entity, and our body is like a cloth which we change. The soul changes with time. So I totally don't agree with it because I mean we can't prove the existence of soul using logic and science. I mean there can be soul, but it can't be proved whatever way we try to think. Srinidhi? Ma'am, I also I understand this concept of soul, but I do not agree with it, and I do not believe in the existence of soul and the soul body duality also. But I also particularly disagree with this concept of soul body duality because all the morality that opposes human nature and sees human nature as something to be suppressed comes from this soul body duality. ओके, ठीक है, ठीक है. Okay, Indian philosophy का समझ में आया वो क्या बोलते हैं, right? When we talk about Western philosophy, there are certain philosophers who will say that Plato says that soul is immortal, right? And it exists before birth. I would like to add some explanation. So there are saying that it is not in our real life to say that this is not visible, which we cannot feel, we cannot accept it. So when we are talking about science, it says that energy can't be created, can't be destroyed, and the body which we carry
it depends on the energy, on which we because of which we live. So, if the body destroyed, that energy can't be destroyed. Because of energy can't be created, can't be destroyed. This makes sense that body is eternal, our soul is eternal. But we are comparing our soul as energy. So it is practical. So, Okay. Saptarishi, Srinidhi, do you want to say something to that? I couldn't hear what she said. I'm saying that eternal soul can be exist, like we have studied about that. Science says that energy can't be created, can't be destroyed. So our body is working on an energy which called soul. We named it as a soul, but it is an energy. When body destroyed, according to the law of science, the energy can't be created, can't be destroyed. It means the energy which we contain is eternal. So this was my explanation to the word eternal soul. Well, in this regard, I would say that soul is not as such our physical energy. Soul can't be described through the idea of physical energy, because physical energy, as we can see in our world, like thermal energy, like solar energy, these things can be described to physics. But soul is very much metaphysical, and metaphysical energy doesn't go with the laws and the rules of nature. So, what I feel like, what you want to say, I might say that our body works because of different organs and the working of our cells, and this actually works through our body is like a machine, and our organs work properly altogether. As a result, simultaneously, as a result, our body works, and after our death, this body, the physical entity, the cells decay and actually goes into the ground, because ultimately we know there is the process of breaking down, and everything breaks down ultimately, and it actually goes into the nature. So ultimately we come from the nature, and ultimately our body actually goes into the nature. So this is my analogy of this idea, because we can't actually mix up the physical energy and the metaphysical energy. Two things are very much different, because two things, one actually follows the rules and regulations of our nature, physical laws, but soul doesn't actually follow these things and can be proved using science. क्या समझ आया? That our body is, according to him, he says that saying that our body is not following the rule and laws which are physical energies which exist, which we can see in our world, are following. So our body used to go back to the nature where we came from after death. So we explain about the difference between metaphysical and physical. And into which criteria we kept soul, in metaphysical or physical? Metaphysical. Yes. Saptarishi, in which option did you keep Soul, soul falls into metaphysical idea, and the our body comes into physical aspect. Okay, what are metaphysical? Pre-exist. Which pre-exist. Okay. Yes, Saptarishi. Metaphysical is something that can't be described through science and such. I mean, it is beyond our understanding and the rules and regulations of physics or nature, beyond the Exactly. science. Something which are beyond physical world, right? And when we talk about physical, this is something that we can see, that we can touch, right? So what did you understand from this theory? What exactly is trying to say? That it is metaphysical, right? We are talking about soul, that this is beyond universe level, right? And when we talk about physical body, we can see, we can touch. Okay, so this is why he kept it this second. Okay. Now what? Other than this, he said. Then how did you explain this theory with the Arya's relevance, Saptarishi? Well, actually, she said that if we talk about entropy, that if we look at into the idea of entropy, that always the energy increases. There is no destruction of energy. Arya actually talked that the soul is a source of energy, and after death, this can't be destroyed. So it actually moves from one body to another. So it actually passes eternally. But my point is that how we can prove the existence of soul beforehand, right? Before the birth, how can we prove that there is soul?
this concept of idea, this idea that soul moves, only works when we know that there exists soul beforehand. But in this idea, we can't prove the existence of soul beforehand. It is all metaphysical. We are thinking that there might be something that exists. So all the things that the rules of the physics and nature actually falls apart in this criteria or in this idea. Because it goes like beyond the physical world, so it can be like described. Okay, when we talk about physical, this is something that is observable, something that is tangible, right? Srinidhi, do you want to say something to this? Yes, ma'am, I agree with what Saptarshi has said. And also, ma'am, I want to add another point here. This debate that soul is immortal, we can connect it to our previous topic. We have discussed that existence of evil and how can we allow, how can God allow this much suffering to exist in this world? If we connect this to this idea of immortality of soul, then we can find an answer here. We are Okay, doing makes some, sense. if we are doing some wrong things, or if we are doing some things in this life, or our suffering in the next life, if we consider a next life, then it explains why God allows suffering, because that is consequence of our own actions. Okay, ठीक है. Indian philosopher को समझ आया what they say about soul? Okay. Now after this, when we talk about Western philosophers, there are philosophers who says like Plato that soul basically exists before birth, right? And Aristotle is there who says that soul and body are connected. ठीक है? तो ये ideology किसकी है? This is what Western thinkers says. That soul is something which exists pre-birth, right? And that both are what? Both are connected. Okay, this is the difference between Indian philosophy and Western philosophy about the soul. समझ में आया? Now the question arises that is the soul immortal? Is the soul immortal? Is it something that it never dies? According to you, what it is? Srinidhi? Ma'am, I do not believe in the existence of soul itself. So Okay, ठीक है. Yes. I mean, soul remains immortal until its purpose is served. Okay. So Harshit says it remains immortal. Until its purpose is served. ठीक है. Why I say this because back when I was young, maybe 9th class or so, I've been to ISKCON for a summer camp. So it's basically all the things about Krishna and all. People there used to preach in such a way that soul is part and participle of God. So until its purpose is served, it will be on this earth. No matter whatever. So you believe in its existence, but for a certain period of time you believe in its existence, right? Yes, you. Also, you also believe in this. Okay. So when we talk about Indian philosophy, what Indian philosophy says? That there is existence of soul. Okay, it do believe that soul exists, right? But it does not consider it to be, connect it with body, right? So what it says, ki, this is something that never born and never dies, right? This is the immortality it talks about, right? In Bhagavad Gita also, it says that, soul cannot be burned, it cannot be cut, it cannot be destroyed, right? It's existing, right? So body, if we talk about, right, it dies, right? But soul continues, okay? So it's like Hinduism में हमारा जो soul है, it is eternal, right? It is existing, right? Christian में बात करें तो even that also says the same, that soul lives even after death, right? And when we talk about Buddhism, so Buddhism क्या बोलता है? Soulless. There is no soul theory, as it focus on practical thinking, right? So when we talk about Buddhism, right, so its theory focused more on suffering, more on the problems that were existing in reality. Okay, so this theory, Buddhism theory, did not focus much on God, the existence of God, right? And the same goes with the concept of soul as well. Okay, so जो purpose, जो चीज basically solution नहीं दे रहा था suffering के regarding, right? He never basically considered it to be true or considered it to be worthy to even talk about. Okay, so this is the Buddhism theory that we have when it comes to soul. Okay, समझ में आया? Rebirth. Okay. तो वो रीबर्थ पे फोकस करते हैं कर्मा की वजह से, ठीक है?
व्हाट ही सेज कि कर्मा बार बार हम लोगों की तरफ क्यों आता है, ही फोकसेस ऑन द साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है। वो कर्मा जो है हमारा, राइट, नाउ कर्मा इज समथिंग डिपेंडेंट विद द नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड समथिंग टू बी इल्यूजन, ठीक है। व्हाट ही सेज सफरिंग इज हैपनिंग, राइट, देयर इज अ प्रोसेस, बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें वो 4 नोबल ट्रूथ बताते हैं, राइट, एंड देन ही गिव्स डिफरेंट थ्योरीज अबाउट इट, उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं, राइट। सो ही कंसीडर इट टू बी अ साइकिल, ठीक है, कि जब हम ये लोग साइकिल में चलते रहते हैं इसलिए हमारा रीबर्थ होता है, राइट। हमारा रीबर्थ तब नहीं होगा जब हम लोग उस लेवल की हम लिबरेशन अटेन कर लेंगे, ठीक है, वो नॉलेज अटेन कर लेंगे, ठीक है। सो रीबर्थ इज बेसिकली it with karma, ठीक है, but he did not focus his theory with soul or god, ठीक है। फॉर दिस रीजन, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, अभी की लाइफ में, ठीक है, अगर सफरिंग की बात करते हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा था। So he is considered to be, a person who is always quiet when it comes to the, definition of God or existence of God. Buddhism do not take the concept of soul and body as different, or they don't accept the concept of soul. Yeah. He do what? That they do not accept the concept that soul and body are different, or he did not talk about it. Yes, Saptarishi, any question? No. Srinidhi Bacha? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now, the question arises कि rebirth क्या होता है? What is rebirth? Life after death. Life after death. How many lives we are talking about? 7? Okay. और? transfer of soul from one body. Okay, ठीक है, good. तो we are talking cycle of birth and death, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं rebirth, ठीक है। अब rebirth होती कैसे है? This is based on your karma, मतलब it is based on your action, ठीक है। अगर good action होंगे तो आपको जो है गुड लाइफ मिलेगी, बैड एक्शन होंगे तो आपको बैड लाइफ मिलेगी। दिस इज द कर्मा दैट इंडियन फिलॉसफी ऑफन टॉक्स अबाउट, ठीक है। अब if we talk about logic, but it basically depends on the across lives also, ठीक है। If soul keeps taking birth, right, so as human it is taking, as animal it is taking, different conditions पे अगर वो basically birth ले रही है, right, so everything is depending on this concept that is karma, right। Indian philosophy इस चीज पर basically बहुत ज्यादा believe करती है when it comes to rebirth. Understood here? Got it? ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज नॉट रैंडम, ठीक है, इट इज बेसिकली लिंक्ड। यहाँ पे कार्मिक कंटिन्यूटी की बात करते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। नाउ व्हाई दिस रीबर्थ हैपन? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिजायर्स, मतलब इच्छा की वजह से जो होता है, राइट, एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट के साथ साथ इट हैपेंस बिकॉज ऑफ बेसिकली मोह आल्सो, ठीक है, मतलब अटैचमेंट मतलब मोह, राइट, एंड इट आल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ कर्मा, मतलब एक्शंस की वजह से जो चीजें होती है। सो इन तीनों चीजों की वजह से जो है हमारा karmic action happens, right? So basically desire and karma is what? This is what giving to us about the rebirth. Okay, understood till here? Liberation क्या होता है? Yes. किस चीज से? मोक्ष? UPSC से? I don't know if this is the right way to ask for let be solid. But you told that Buddhism doesn't believe in the concept of soul, but karmic reaction. But Karmic reaction because of karma and all. But how do the karma return back to so and so thing until or unless the okay, soul थोड़ी is सी released? छोटी सी थ्योरी बताऊंगी क्योंकि इसके ना बहुत सारे नोबल ट्रूथ और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है, ऑल्दो विल बी रीडिंग बुद्धिज्म, ठीक है, बट थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म ना, बुद्धिज्म ने बोला कि चलो ठीक है, सफरिंग जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, देयर इज अ सफरिंग, फिर बोलता है देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग आल्सो, ठीक है। अब अगर कॉज है तो हमारे पास में सॉल्यूशन भी है, राइट। अब उस चीज के लिए उन्होंने डिफरेंट नोबल ट्रूथ दिए, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट नोबल ट्रूथ के बाद में उन्होंने 8 फोल्ड पाथ भी दिया, ठीक है, कि अगर तुम ये 8 फोल्ड पाथ यूज करोगे सो यू विल गेन व्हाट? यू विल गेट लिबरेशन, ठीक है। ये बेसिक सी थ्योरी है जो इसके पास में है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ये 4 और 8, ठीक है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस
and you are basically, you know, involved in this world, right? You are not understanding that this UPSC is not happiness according to Buddhism. This materialistic world is not happiness according to Buddhism. This is not the life that, you know, is true according to them, right? Understanding this is the रियलिटी, ठीक है? और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें मिलेगा लिबरेशन। अगर तुम इसे नहीं समझ रहे हो तो फिर से तुम्हारा रीबर्थ होगा, ठीक है? वापस से तुम वही साइकिल करो समझोगे, राइट? तो जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा, और तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा तुम वापस से यहीं पर आ जाओगे, रीबर्थ। अंडरस्टूड? ओके। Okay, so when we talk about liberation, what exactly it is? It says no more birth, no more death, right? And we are not talking about suffering over here, ठीक है? हिंदुइज्म में बात करें तो हम लोग बात करते हैं मोक्षा की, बुद्धिज्म में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट निर्वाणा, जैनिज्म में बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट केवल्य, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमारे पास में मोक्षा, निर्वाणा, केवल्य, मोक्षा, निर्वाणा एंड केवल्य, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? अंडरस्टूड? Yes. Any question? Anything you want to ask? Ma'am, I want to, if we consider rebirth, I want to ask about the identity of soul. How do we define a soul? For example, in one life, the soul may be a good person. He has done some good deeds, good virtuous person. In the next life, he may exist as some villain. He may be committing very heinous crimes, or in the next life, he may exist as an animal, as a bird or something. So, how does one define a soul? What is the soul's identity in this case? Okay. If we consider that we have many lives and rebirth is there. इंडियन फिलोसफी में भी ना हर एक फिलोसफर ने अलग अलग थ्योरी दी है, डिफरेंट फिलोसफर्स गिव डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग सोल, ठीक है? बट एक बेसिक कांसेप्ट लेकर चलते हैं, ठीक है? सपोज लाइक यू आस्क द क्वेश्चन अबाउट द सोल, ठीक है? कि on what basis we are going to measure about the goodness, ठीक है? What if like I did something good in my previous life and I am faculty over here, I'm living a good life, I'm teaching you people, right? So I'm sure that I've like done something good, ठीक है? कि मुझे इतने प्यारे से बच्चे मिले हैं, right? Now मेरा ईमान बदला, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, राइट? और पहले ही दिन में मैं 10,000 में पकड़ी गई, ठीक है? करप्शन लेते हुए, राइट? नाउ योर क्वेश्चन इज दैट इफ माय बेसिकली एक्शंस आर सो रॉन्ग, ठीक है? मैं करप्शन भी कर रही हूँ, आई एम बेसिकली किलिंग पीपल आल्सो, राइट? आई एम नॉट डूइंग एनी गुड टू द सोसाइटी, राइट? So whatever I did in my previous life is like of no worth, right? So again, according to Indian philosophy, अगर हम basic concept लेकर चले, not every philosophy we are talking about, right? The basic concept that we are taking of Indian philosophy, most of the philosophers believe कि अगले life में what I'll have, you know, based on these karmic action that I'm doing right now, ठीक है? उसके basis पे I'll have the rebirth, ठीक है? उसके actions पे I'll have the basically birth, ठीक है? Next में, understood Srinidhi बच्चा? Ma'am, I did not understand what you said. Our lives are based on karma. That I understood, ma'am. What I'm asking is, if a soul exists without body, what is that soul's identity? How do we define a soul? Because that soul does not have any idea of means in one life it does not have idea of another life. So and the personality and everything is from one life is different from another life. So if we separate the soul from body, what is its identity then? That's what I'm Okay. asking. Okay, so you are asking about the identity of soul. Yes, ma'am. That how we are going to define it, क्योंकि चलो ठीक है, बॉडी को तो हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज समथिंग टू बी मटेरियलिस्टिक, ठीक है? जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इट्स लाइक अ मटेरियल जिसके अंदर सोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है? बट हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन सोल? इज दिस द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग? Yes, ma'am. We are agreeing that soul exists. Then what is its identity? How do we define a soul? ओके, देखो इंडियन फिलोसफी में और वेस्टर्न फिलोसफी में दोनों की अलग अलग अप्रोच है, राइट? एंड सेम गोज विद बुद्धिज्म एंड डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स आल्सो, राइट? सो रिगार्डिंग दिस यू हैव टू वेट, एज इन द कमिंग स्लाइड्स विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द फिलोसफर्स, ठीक है? इसका आंसर तभी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टेप्स, अगर मैं मिस कर दूंगी तो फिर उसके बाद तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो श्रीनिधि, वेट फॉर द आंसर। Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? एनी क्वेश्चन दैट हाउ इंडियन फिलोसफी टेक्स दिस कंसेप्ट, हाउ वेस्टर्न फिलोसफर्स आर टेकिंग दिस कंसेप्ट, राइट? इन जनरल वे हाउ इंडियन फिलोसफी इज कंसीडरिंग सोल, राइट? कोई लोग मर्ज करते हैं, कोई मर्ज नहीं करता है, राइट? अच्छा, ठीक है, हम इंडियन फिलोसफर्स की बात कर ही रहे हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चारवाक आल्सो। एनीवन हर्ड अबाउट दिस? आई नो सप्तऋषि नो अबाउट दिस। तुम लोग बताओ, व्हाट इज चारवाक? हु इज चारवाक?
नहीं, चार्वाक is a concept. He is a philosopher. Whatever you say. हाँ, heard about him? Generally, Charvak means 4 words. Charvak means 4 words. When we take what we mean. How? I don't exactly know, but Charvak. You've heard about this concept somewhere. तो 4 word कहाँ से आए? Charvak. No. Okay. So when we talk about Charvak, he's kind of a philosopher who doesn't believe in soul, he doesn't believe in God, right? He believes in the presence, right? So what he talks about, he says that you have to live in today's world. ठीक है, आज के time पे रुको, आज के time पर बात करो, right? So he gives a very different analogy about ghee, right? So what he says that even if you want to live, ask for the ghee from your neighbor, right? And then leave. मतलब मांग के भी खा लो पर खा लो, ठीक है? मतलब but live a better luxurious life, right? That's the theory that he have, ठीक है? गॉड पर बिलीव नहीं करता है, वेदास पर बिलीव नहीं करता है, रिचुअल्स पर बिलीव नहीं करता है, सोल पर बिलीव नहीं करता है. सो ही सेज दैट समथिंग दैट आई डिडंट सी, व्हाई विल आई बिलीव इन दिस, ठीक है? व्हाट आई बिलीव इन इज कि मैं आज जीऊंगा और आज बेसिकली ही मैं आज जीने लगूं, ठीक है? दिस इज अ थ्योरी, बेसिक थ्योरी ही कम्स अप विद, ठीक है? तो इंडियन फिलोसफी में सारे फिलोसफर्स ऐसे नहीं है who have this thinking of soul and body, right? There are philosophers who doesn't believe, who goes with the rationality also, ठीक है? जैसे most of the western philosophers comes up, ठीक है? आर्या, क्या समझ में आया यहाँ तक? डिग्निटी? लग्जरी में डिग्निटी क्यों नहीं हो सकती है भाई? If I am living luxurious life, I am not dignified enough to have that luxury life. घी खाना है तो मांग के खा लो, बट खा लो, अपनी लग्जरियस लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो। हाँ, मत करो। तो मांग के खाने में डिग्निटी कैसे होगी? क्यों नहीं है मांग के खाने में डिग्निटी भाई? You made that concept of asking someone something, right? You made that concept to be wrong, not me. You being a society made that concept wrong. मैं मांग के खा रही हूँ, मैं खुश हूँ, तुम्हें जो बोलना है बोलो मुझे. समझ आ गया यहाँ तक? You don't believe it? He only prioritize the present time. हाँ. Did he make any impact on? Impact? Okay, so when we talk about Charvak, you are asking about Charvak now. So we don't have Charvak's text, okay, anywhere, right? So whatever we heard about Charvak, we heard from different ideologies. ठीक है, किसी और की theory से हमें समझ में आया, right? So when they criticized Charvak, we came to know that this was something that he said, right? Now this theory is also there कि ऐसा भी हो सकता है किसी ने गलत interpret किया हो उसको, right? So this is the different analogies and ideologies that come up with when it comes to Charvak, ठीक है? तो उसके actual text हमारे पास नहीं है, right? हो सकता है कि उसको गलत समझा गया हो, he was trying to say something else और अपनी preference के हिसाब से किसी ने ऐसे कुछ बोल दिया हो. Sorry. यहाँ तक समझ आ गया? Arya, how will you explain all this? We are talking about the concept of soul, in which we are explaining the presence of soul in our world. In Indian philosophy, soul is considered to be a part of body. Soul is eternal, invisible, and consigned. So soul is a form of person. In which, Indian philosophy consider it as body. Like they believe that a body and a soul two different things. Body is temporary and it changes, but soul is something immortal. It only transfers the body, which should be called as a rebirth. That is also a desire, also a karma. That's why the karmic continuity happens, and people used to think rebirth. And there is also a concept of liberation, where the soul get achieved when the soul get achieved the liberation, then there is no birth, no death, and no suffering. Different aspects of Indian philosophy, we call it nirvana, moksha, and kaivalya. And in Western philosophy, no, in Indian philosophy, there is a philosopher whose name is Charvak. He do not accept the concept of he believes in only present. He do not accept the concept of
in Western philosophy, there's a philosopher called Pluto and Aristotle. Pluto says that soul exists before God. And Aristotle mentioned that soul and body both are connected to each other. Okay. ठीक है. So now let's move to another concept. Meaning of soul. ठीक है. Immaterial essence, source of consciousness, and beyond body. ठीक है. So Shridevi Bachcha, can you mute yourself? Yes, ma'am. Okay. So when we talk about soul, what is it? It is basically okay. जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, रिलीजन में वी आर रीडिंग एक पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है. इंडियन फिलोसफर्स क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स क्या बोल रहे हैं, जनरल आइडिया क्या है सोल का, उस कंटेक्स्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोल, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इट मींस दैट सोल इज योर रियल सेल्फ, राइट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी हेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ हेयर, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग्स ओवर हेयर, ठीक है. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एज ट्रू आइडेंटिटी, योर रियल सेल्फ वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. So this is the inner essence that is existing beyond all these things, ठीक है, जो इन सारी चीजों से परे एग्जिस्ट करता है, that is existing beyond all these things, right. So this is soul we have, right. So according to philosophy, what is soul? Soul is the immaterial essence of a person, right. So this is not something physical that we are talking about, ठीक है. क्या है वो है immaterial essence, ठीक है. Now consider this body as outer layer, ठीक है. अगर हम माइंड करें, these are thoughts and emotions we are talking about, ठीक है. लेकिन सोल की अगर हम बात करते हैं, this is the one who is experiencing all this, ठीक है. तो जो भी हमारा माइंड है, right, whatever this world is, right, all of these are experienced by whom? This is experienced by soul. Again, when it comes to concept like these, you can criticize it, you should criticize it, ठीक है. When it comes to Western philosophy and Indian philosophy, both of these differ with the ideology regarding this soul, ठीक है. Understood, Ashwini बच्चा? Saptarishi, understood बच्चा? Yes, sir. So what it is, you are not your body that we are talking about, ठीक है. वो क्या है, you are the experiencer inside, ठीक है. So soul is what? Soul is the one who is experiencing, ठीक है. Got it. Now when we talk about nature of the soul, ठीक है, nature क्या है soul का? What do you think it might be, Saptarishi? The soul is eternal, indestructible, and it actually is metaphysical. Very good, good. Okay, first of all, it is invisible. और जब हमारे पास में, this is the first in nature we have, so this is on base of this we criticize this. Many philosophers criticize this, that if we cannot see this, who is going to verify that it exists or not, ठीक है. जब कोई verification है ही नहीं तो मैं क्यों मानूं exist करती है चीज, right. This is the first nature that these philosophers who are in support of soul, right, they say that this is invisible, right. So this exists but दिखता नहीं है, right. You cannot see it, right, you cannot touch it. Why? Because it is beyond matter, ठीक है. जो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है, because it is beyond matter, this is why we cannot see it, right. Because it is not made of physical elements, right. Next is eternal. क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अनचेंजिंग की बात कर रहे हैं, राइट. सो बॉडी इज चेंजिंग, ठीक है. कल आर्या कुछ और थी, आज आर्या कुछ और बन चुकी है, राइट. पहले आर्या नहीं पढ़ती थी, अब आर्या पढ़ने लग गई. आर्या का पहले स्केड्यूल नहीं मेंटेन हो रहा था, अब होने लग गया ना. Good. So changes are there, right. So the same goes here, right. So this is eternal, right. So when we talk about this, it is basically never born and it never dies, right. So even after death, it is what? It is continuing. This is the second feature that we have. Understood till here? Got it? Okay. After this, we have conscious. How will you explain this conscious? Harshit. Conscious is basically which has life. Exactly. Source of feeling we are talking about. Awareness we are talking about. Emotions. ठीक है. मटेरियलिस्टिक चीजों में, राइट, हमारे पास में कॉन्शियस नहीं होता है, राइट. दिस इज व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, ठीक है. एनिमल्स में भी और हमें भी यही डिफरेंस है, दिस ऑफ कॉन्शियस, ठीक है. नाउ
when we talk about this, according to Indian philosophy and the philosophers who there are in Western philosophy also who believe in this theory, so they are saying that this conscious is arising from where? From soul. This is arising. Okay, so all of this conscious is coming from soul. Okay, now after this, independent of body. Independent of body का मतलब क्या है? That it is not dependent on body. Okay, when we talk about soul, even if body is not existing, soul is going to be there, right? It is never ever going to be die, right? Soul is going to be continue its journey, right? That's why rebirth becomes possible. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास में नेचर है ऑफ सोल. ठीक है, तो पहला क्या हुआ हमारे पास नेचर? पहला है इनविजिबल, राइट? वी कैन नॉट सी इट, राइट? Another is eternal, right? Eternal means what? It is unchanging, you cannot change it, right? After this, it is if you have like conscious. Conscious is awareness, right? You have feelings, you have emotions, you know what you are doing, right? So this is conscious we have. After this, we have independent body, right? So when we talk about independent, right, it is not dependent on body. ठीक है, वो exist करता है खुद में भी. Even if body is not there, soul is going to exist. ठीक है, so these are the natures that we have of soul. ठीक है, understood? Now again I'm telling you, when we are talking about this definition, this is we are talking about in general way. ठीक है, अभी हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी या इंडियन फिलोसफी में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे. ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन? Ma'am, I have a doubt here. बच्चा, Does soul have sensory perception? soul have sensory perception. Yes, ma'am. Okay, so as you know, our sensory perception is also dependent on what? जो हम sensory perception की बात करते हैं, किस चीज पर डिपेंडेंट होती है? Our sense organs. Apart from that, बच्चा, सप्तऋषि. Our brain, ultimately our brain actually works. Brain actually Harshit? controls our sensory organs and ultimately experience. What did you say, Saptarishi? I said that our brain is the thing that is controlling the sensory organs and which ultimately is experiencing things. So ultimately our brain is the one who is actually controlling these senses. Consciousness कैसे रहती? Harshit, sorry. As we discussed, consciousness is the source of feeling. Hmm. The other is sensitivity perception. Sensitivity is a feeling. Okay. So when we talk about, that's true. जब हम लोग बात करते हैं ना soul की, right? And even we talk about these sensory perception, right? They are dependent on these conscious only. ठीक है? अगर हम sensory experience की बात करें, they are just tool we are talking about. वो सिर्फ tool है हमारे पास में, right? The real challenger, the real gamer is here. ठीक है? Conscious की बात करते हैं, right? As we know कि अगर हम senses की बात करें तो this is the tool that we have, right? Mind की बात करते हैं तो वो connector है हमारे पास में, right? So when we talk about animals also, right? यही difference है हमारे बीच में और उनके बीच में. ठीक है, समझ में आया श्रीनिधि बच्चा? So if you are asking that if soul can like see directly or smell directly, तो नहीं, soul cannot do that. ठीक है, क्या समझ आया रहा? हाँ? ओके ओके ठीक है, एक बार सुनो, परसेप्शन होती कैसे है? परसेप्शन होती है पहले हमारे पास में है सेंस ऑर्गन. ठीक है, सेंस ऑर्गन के बाद इट गोज टू माइंड, माइंड के बाद में जाता है सोल में. ठीक है, नाउ सोल इज अवेयरनेस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस होगा. ठीक है, तो इस वे में वो चीज जाती है. ओके, एज कंपेयर टू एनिमल्स एंड बेसिकली ह्यूमंस, द डिफरेंस इज देयर. ठीक है, उनमें सेंसरी नहीं होता इतना जितना होना चाहिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में होता है कि वो बेसिकली एग्जिस्ट कर सके इस लाइफ में, राइट? हमारे पास में कॉन्शियसनेस है बेसिकली एट दैट लेवल कि हम लोग सर्वाइव कर सके, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. ठीक है, यस दे डू. ठीक है, इंडियन फिलॉसफी इस चीज में पूरा पूरा बिलीव करती है. ठीक है, एंड स्पेशली जैनिज्म फिलॉसफी, राइट? वो हर एक चीज में सोल में ढूंढती है, राइट? व्हेन इट कम्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो, इवन उस चीज में भी वो क्या कंसीडर करती है? सोल कंसीडर करती है. ठीक है, गॉट इट? So the answer is that soul does not have sensory perception. ओके, इसका एक आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर्स मैं दे सकती हूँ क्योंकि कुछ फिलॉसफीज मानती है, कुछ नहीं मानती है. ठीक है, अगर वेदांता की बात करें तो वेदांता क्या बोलता है? वेदांता बोलता है कि जो सोल है हमारा वो प्योर साक्षी है, राइट? मतलब पूरा का पूरा विटनेस है, राइट? तो यहाँ पे तुम लोग क्या देखोगे? दैट ही इज अ ऑब्जर्वर बट ही नेवर एक्ट. ठीक है, तो उस चीज में तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट? सो डिफरेंट फिलॉसफीज गिव डिफरेंट आंसर्स टू दिस. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यू नो, इट्स लाइक सोल के पास में कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है. Can you mute yourself, Bhatta? Yes.
बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ऑल परसेप्शन इज नोन बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। उनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है, पर इसकी वजह से ये जितनी भी परसेप्शन है, यू आर नोइंग इट थ्रू व्हाट, थ्रू सोल, ठीक है, समझ में आया? श्रीनिधि बच्चा, अंडरस्टूड? और ऐसे ही ओके, एक और एग्जांपल है न्याया का, ठीक है। अब न्याया क्या बोलता है? न्याया बोलता है कि सोल इज द नोअर, ठीक है, मतलब उसे सब कुछ पता है, राइट? सो ही इज बेसिकली यू नो अवेयर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन उसे भी जरूरत होगी किसकी? सेंसेस की जरूरत होगी, राइट? देन ही दैट बेसिकली नोअर नीड्स सेंसेस, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो द कनेक्शन, ठीक है, द कनेक्शन इज डिफरेंट। तो अलग अलग फिलोसफी, न्याया, वेदांता, राइट, दे टॉक्स अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सोल, अलग अलग फीचर्स दिए उन्होंने, राइट? बट द मेन एंड द बेसिक फीचर इज हेयर कॉन्शियसनेस, ठीक है। श्रीनिधि, गॉट इट बच्चा? सप्तऋषि, Yes, ma'am. do you want to say something to this, Saptarishi? Uh, Not really, but the fact is that in our philosophy, in our Indian philosophy, if we look at various aspects, like in Advaita Vedanta, we are talking about the soul. Everything is illusion. Just there is the Brahma, that is the ultimate reality. Basically, the ideas of Atman and all that, everything is a part of the illusion that is being created by the Brahma. So Brahman is the ultimate reality, and everything else is the illusion. But later on, other parts of Vedanta like Nyaya, as well as in Prakriti, we might find that the various aspect of how this works. Not only Brahman, but ultimately Atman is also very much effective regarding this consciousness. So, in our Indian philosophy, it is believed that soul is the source of consciousness, and consciousness ultimately leads to our sensory organs. So, in a way, there is an indirect connection between these two things. So, because ultimately soul is like eternal thing, it actually changes bodies like clothes, as said in Bhagavad Gita. So, soul is a eternal, independent being. And I mean, it is a little bit distant from our physical body. So, in a sense, sensory organs also is a little bit detached, though it is linked. Uh, Basically, our senses are very much dependent on soul. That is my point. Okay. Yes, Ritik, do you want to say something, please? Arshit, sorry. Partially. आधा कहाँ गया? Advaita Vedanta ka theory and this the eternality of soul does make sense. I think I have to wait some more to study about that. हाँ, when you will be like covering half of the Indian philosophy ना, it will like start making sense to you, ठीक है? But basic से शुरू कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा idea मिल जाए exactly कहाँ से चीजें हैं, ठीक है? But यहाँ तक तो कोई problem नहीं है ना? Is it making sense? How is philosophy? Like my thought process has changed last 10 days. I could feel it. And whenever there is a statement or the way I look at things now is totally different. Is it like with the positive or negative? Positive. ठीक है। Totally positive. तो जैसा कि आपके दोस्त ने बोला था वैसे तो नहीं हो रहा है ना? No, man, like that's bullshit. ठीक है, चलो ओके। तो पहला हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली फिलोसफर्स ने ये सोल वाले कंसेप्ट पर बिलीव ही क्यों किया, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस फिलोसफर्स हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ठीक है? क्यों बिलीव किया? That is not something which controls the body. ओके, अच्छा ये तो तुमने उनका रीजन बता दिया ना, ये बताओ कि ऐसा क्या था कि उन्होंने बिलीव करा, किस वजह से जो है बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं सोल की? Maybe because everything is like we are saying or like my similar body, but we think different. We are as a individual, we exist different from each and every person. So maybe that's why they believe in the concept of soul, which makes us different from the other. मेरा क्वेश्चन है ये नहीं कि उन्होंने कैसे बिलीव किया, मैं पूछ रही हूँ क्यों करा, ठीक है? मे बी उन्हें आइडेंटिटी एक्सप्लेन करनी थी, maybe that's why they are talking about soul, ठीक है? Because they wanted to explain the identity, ठीक है? That who you are, who am I, ठीक है?
हर किसी का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है ना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफीज हर किसी का सोल भी अलग अलग होता है, कार्मिक एक्शंस अलग अलग होते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हारी थ्योरी कनेक्ट होती है, राइट। सो टू एक्सप्लेन दिस आइडेंटिटी दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सोल, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है इसके अलावा? बेसिकली मोरल लाइफ को समझाने के लिए। कौन सी मोरल लाइफ, कैसे समझाएंगे मोरल लाइफ को इससे? व्हाट दिस पॉइंटर इज टेलिंग टू अस? The soul is related to the moral consciousness. You get the moral consciousness. Okay, so what Indian philosophy says that good and bad action they matters, right? But when we talk about this good and bad actions, right, result will come later, and that will be what? That will be karmic action that we have, right? So to explain moral life, right, they introduced the concept of soul, ठीक है, they started explaining the concept of soul, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो सकता है? पर्पस ऑफ लाइफ, क्या पर्पस ऑफ लाइफ? So when we talk about this, basically they are telling to us that this life is not, random. Okay, this life has purpose, right? This life is meaningful. If this life is created, if we are talking about soul, right? If we are talking about body, right? So there is some characters also, there are some features also, there is some purpose also, there is some meaning also, right? And there is an order to this, right? So to explain all this, they delivered this idea of soul. Okay, तो यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, राइट, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट, एंड हाउ वी आर पार्ट ऑफ इट, हाउ सोल इज कनेक्टेड टू इट, what changes it is bringing out in our body, ठीक है, how we are reflecting these changes in the basically universe, ठीक है, that all is explained through this, ठीक है। समझ में आया श्रीनिधि, सप्तऋषि? ओके, मोरल लाइफ का मतलब ये है कि गुड एंड बैड, ठीक है, इट एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट गुड एंड बैड, ठीक है, सो देयर माइट बी रीजनिंग टू इट, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजनिंग, तो मतलब वो कार्मिक जो हमारा पोर्शन है, राइट, ऑन दैट बेसिस, ठीक है, कि हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट, और उस बिहेवियर की वजह से कि गुड क्या होना चाहिए, बैड क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पर जो हमारा कार्मिक एक्शन आएगा, एंड दैट विल डिलीवर टू द रीबर्थ, राइट, जो हमने इंडियन फिलॉसफी में पढ़ा है, ठीक है। अंडरस्टूड, गॉट इट? एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ अब हम लोग ना जो बात कर रहे हैं कि फिलोसफी ने ऐसा किया, फिलोसफी ने वैसा किया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद में वेस्टर्न फिलोसफर्स, प्लेटो, ठीक है, डिफरेंट फिलोसफर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उन्होंने सोल के बारे में बोला क्या है, ठीक है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफी ना एक और चीज समझो कि देयर विल बी लाइक टू थिंग्स, ठीक है, कुछ कुछ होंगे रीजनेबल, दैट विल बी रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, जो लॉज के बारे में बात करेंगे, ट्रुथ के बारे में बात करेंगे, एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे, एंड दीज थिंग्स विल बी कनेक्टेड टू मॉडर्न लाइफ आल्सो, ठीक है। आज के टाइम पे आज के क्राइटेरिया को कनेक्ट करके चलेंगे हम इन लोगों के बारे में, ठीक है। एंड विल हैव इंडियन फिलोसफी, राइट, जो कि मेन सोर्स जो है ना हर बार वेदास लेते हैं वो, ठीक है, दे कंसीडर इट टू बी, ठीक है, देयर सोर्स ऑफ देयर बेसिकली थ्योरी, ठीक है। तो वेदास को लेंगे और जो हमने डिस्कस करा भी इन फिलोसफी का बेसिक, ठीक है, कि सोल और बॉडी को दोनों को कनेक्ट करके नहीं चलते, एंड दे बिलीव इन बेसिकली कार्मिक एक्शंस आल्सो, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस जो है दिमाग में बैठाकर चलना, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन यू हैव? त्रिवेदी बच्चा? ओके, नाउ क्या कंसीडर करके चलती है वो सोल को? ओके, गुड। सो सोल को वो लेकर चलती है अटर्नल, सेपरेट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, कि दोनों चीजें अलग अलग है, इवन इफ बॉडी इज बेसिकली डाइड, राइट, सो सोल इज गोइंग टू एग्जिस्ट देयर, ठीक है। दिस इज व्हाट हिंदू फिलोसफी बिलीव्स इन, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्या बिलीव करती है? नो सोल, ठीक है, उन्होंने इस चीज को बिलीव किया ही नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ना कोई परमानेंट सोल है, मतलब देयर इज नो अनंता, ठीक है।
So there is a flow of consciousness that is happening, right? जैसे कि flame is passing from one candle to the another, ठीक है? तो वैसे वो चीज होती है, ठीक है? मतलब कॉन्शियसनेस हमारा फ्लो करता है, सोल फ्लो नहीं करता है, ठीक है? क्या फ्लो करता है? सिर्फ कॉन्शियसनेस फ्लो करता है, राइट? सो दे डू नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ सोल, ठीक है? बुद्धिज्म उस चीज को नहीं मानता है, राइट? तो मतलब कंटिन्यूटी तो एग्जिस्ट करती है, राइट? बट जो तुम लोग कंटिन्यूटी के अलावा जो फिक्स सोल की बात कर रहे हो, राइट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? समझ में आया यहां तक? गॉट इट? ओके, आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड वेस्टर्न फिलोसफर्स क्या बोलते हैं. यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, give me one thing that they might have said different than these Indian philosophers. कुछ अलग बोल दिया उन्होंने, कुछ अलग क्वेश्चनिंग कर दी हो. One thing I can say that, as Plato said, if I look into the idea of Plato, that he said that there is a perfect being, soul, that is very much independent of the body, and he actually is in the world of ideas, the realm of ideas. So basically, soul is very much distinct from our body. But in Indian philosophy, we can see that soul is very much attached to our physical body. But after death, it actually moves on. So in a sense, we can see in Western philosophy, in certain philosopher, according to certain philosophers, soul is very much distinct, and it is very much different from the body. I mean, they are both distinct from each other. But in Indian philosophy, they are connected in certain. So this uh, difference I can see in Indian and Western philosophy. सप्तऋषि, सॉरी, श्रीनिधि. Yes. Yes, ma'am. I do not know very much, but in Indian philosophy, it is described as soul and soul-body duality. And Western philosophy, there is also very similar comparison, that is mind-body duality is also there. But mainly in Western philosophy, it is more focused on facts. That is, mind controls reason, logic, and these things, and body controls sensory perception. This kind of divide is there. It was similar, but also somewhat different. ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं ना इसकी वेस्टर्न फिलोसफी की, सो दे मेनली फोकस्ड ऑन दी क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज इमोर्टल, ठीक है, एंड व्हाट इज द सोल, राइट, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, राइट. दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वर फोकस्ड ऑन वेस्टर्न फिलोसफी, राइट. तो जैसे इंडियन फिलोसफी में किस पे फोकस करा? रीबर्थ पर फोकस करा, राइट. लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर्स ने फोकस करा इस चीज पर कि अगर हमारे पास में वन लाइफ है, राइट, सो हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई इट, राइट. उसके बाद आफ्टर लाइफ कैसी होगी, हेवन और हेल पर कैसा होगा, राइट. सो दीज वर द कांसेप्ट दैट दे फोकस मोर ऑन, ठीक है. प्लेटो की अगर हम बात करें तो ही सेड दैट सोल इज इमोर्टल एंड इट इज सुपीरियर बॉडी, ठीक है. सोल इज इमोर्टल एंड सुपीरियर बॉडी. कैसे एक्सप्लेन किया होगा उसने इस चीज को? भी तो समझाया है. So soul is real self. Body is temporary. This is the difference that we have. ठीक है. तो basically he believed that body is the one who is doing what? Body is somewhere who traps the soul. समझ आया श्रीनिधि? सप्तऋषि? Yes, ma'am. हर्षित? ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिम ना, उसने सोल को बेसिकली तीन चीजों में डिवाइड करा, ठीक है. तीन चीजें कौन सी थी? पहली थी रैशनल. रैशनल का मतलब क्या हुआ?
रैशनल का मतलब हुआ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग कैसे, क्या रीजनिंग, थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद में है स्पिरिटेड, मतलब करेज। हाउ विल एक्सप्लेन करेज सप्तऋषि? सप्तऋषि, यू आर म्यूट। So courage is basically like facing adversary with strength, or mental stability or mental strength, like facing adversary. That is courage. ठीक है। सो थर्ड इज एपिटेटिव, दैट इज डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है, ऑल द नीड्स दैट वी वांट्स, ठीक है। मतलब वांट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ। अब मुझे मत बोलना कि मैम वांट्स और नीड्स तो अलग अलग होती है, यहाँ पे सेम ही बात कर रही हूँ। ओके, करेज का मतलब होता है दीज आर द इमोशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अबाउट द फीलिंग्स। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे उसने क्या करा, सोल को डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इमोर्टैलिटी, ठीक है, मतलब उनका ये था कि रीजन शुड लाइक कंट्रोल अदर्स, ठीक है, इस चीज को राइट कंट्रोल करना है इन सबको, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा स्पिरिट बहुत ज्यादा होगा देन आल्सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अगर हमारा ये एडिटिव ज्यादा हो गया, डिजायर ज्यादा होगी, देन आल्सो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। सो रैशनल इज एग्जिस्टिंग फॉर दिस रीजन ओनली, सो दैट वी कैन लाइक हैव बैलेंस इन देयर, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब उसके बाद में वो एक और चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज अबाउट द इमोर्टैलिटी एंड रीबर्थ, राइट। सो सोल एग्जिस्ट बिफोर बर्थ, राइट, दिस इज व्हाट ही बिलीव्स। और उसके साथ साथ में सोल कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ आल्सो, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर, समझ आया यहाँ तक? So not only that, he believed in a kind of rebirth, right? जो सिमिलर जो हमारा इंडियन फिलोसफी वाला आइडिया है ना, ठीक है, वही वाला आइडिया जो है प्लेटो ने भी कहीं ना कहीं बिलीव किया था, राइट। So what he says that we already know things, understanding सबको होती है, ठीक है। तो learning is what we are talking about, remembering है, right? So what he says to this कि अगर हमें याद है चीजें, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें वो कहीं से भी याद नहीं है। This we are remembering because soul existed before, ठीक है, क्योंकि सोल पहले से ही एग्जिस्ट करता था, राइट। सो ऑन दैट बेसिस वी नो फ्यू थिंग्स व्हिच आर बेसिक, ठीक है, हमें याद है वो चीजें सिर्फ इसीलिए क्योंकि सोल पहले से एग्जिस्ट करता था। सो थ्रू सोल वी रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसने क्या बोला दैट सोल एग्जिस्ट बिफोर आल्सो, मतलब हमारी बॉडी से आने से पहले भी वो एग्जिस्ट करता है, आफ्टर आवर बॉडी पेरिशेस आल्सो तभी भी वो एग्जिस्ट करता है, राइट। अब क्योंकि बिफोर एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जांपल उसने क्या दिया कि कुछ कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, ठीक है, हमें याद क्यों रहती हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, बिकॉज सोल एग्जिस्ट बिफोर। उसकी थ्योरी, उसकी मर्जी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? गॉट इट सप्तऋषि? हाँ, Yes, ma'am. deja, yes, we can connect it with that, makes sense। deja vu हुआ है कभी? हुआ है? Used to feel it like back then. To you? Nidhi and Saptarshi, to you? Yes, ma'am. It sometimes happens. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एरिस्टोटल का व्यू पॉइंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंटर? एनी आइडिया व्हाट एरिस्टोटल माइट हैव सेड? क्या अलग बोल दिया होगा उसने? When he connected, he do not accept the theory that body and soul are different. He says that both are same. That they both are connected. हाँ, ओके। सो अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो व्हाट ही सेज दैट सोल एंड बॉडी आर कनेक्टेड, ठीक है। अब क्या बोलता है, सोल क्या है? सोल इज लाइक फॉर्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। ठीक है, क्या है ये? फॉर्म ऑफ बॉडी है हमारे पास में, राइट। जैसे कि आई है, राइट, और आई के पास में क्या है? आई इज देयर, राइट, और आई के पास में एक और चीज है, एबिलिटी टू सी, ठीक है। अब ये जब चीज हमारे पास में है ही, राइट, सो इट इज व्हाट सीइंग इज, व्हाट सीइंग इज सोल ऑफ आई, ठीक है, मतलब ये देख लेना क्या है? सोल है, right? So in the same way body is there, right? So it is the form of body, soul क्या, it is the form of body that we have, ठीक है, समझ में आया? Okay, now when we talk about types of soul, तो hierarchy में उसने हमें दिया है, right? तो first is vegetative, sensitive और rational। vegetative,
सेंसिटिव एंड रैशनल। ठीक है, ये तीन फॉर्म्स जो है उसने हमें दी थी। वेजिटेटिव की बात करें, व्हाट इट सेज, इट्स द प्लांट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंसिटिव सोल्स की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। रैशनल की बात करें तो ह्यूमंस, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग ओवर हियर, राइट। तो ये तीन तरह की हमारे पास में टाइप्स है सोल के, राइट। नाउ इमोर्टैलिटी की बात करें तो ही डिड नॉट क्लियरली talked about immortality like Plato. ठीक है, so he says that soul cannot exist without body. ठीक है, mostly he mentioned mostly. ठीक है, and he also said that only intellect part may be immortal. ठीक है, so he is less spiritual and he is looking at more biological. ठीक है, he is like moving towards more scientific things. ठीक है, basic समझ में आया? Understood? समझ में आया यहाँ तक श्रीनिधि? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सप्तऋषि? Yes. About what, बच्चा? Soul cannot exist without body mostly. Okay, so he says that soul cannot exist without body. ठीक है, now he is talking about कि कभी-कभी ना ऐसा होता है कि कुछ-कुछ पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, सोल में, ठीक है, जो इमोर्टल हैं, ठीक है, कुछ पार्ट हैं, राइट, बट सारे पार्ट ऐसे नहीं है। मतलब तुम पूरे सोल को ये नहीं बोल सकते हो कि वो इमोर्टल है, राइट। सो बायोलॉजिकल कंसेप्ट से वो चीज बोल रहा है कि कुछ पार्ट हैं, ठीक है, ही डिफाइंड कुछ पार्ट जैसे कि रिमेम्बरिंग, ठीक है, सो वी कैन कंसीडर फ्यू माइंड थिंग्स टू बी इमोर्टल, ठीक है, लेकिन तुम पूरे सोल को नहीं बोल सकते हो कि वो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। सो समवेयर ही इज टेकिंग टुवर्ड्स द साइंस, बायोलॉजिकल टर्म से वो चीज बोल रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन वी हैव अनदर कांसेप्ट दैट इज रेने डेकार्ट्स, so what Descartes says, Descartes basically give us the concept of mind and body. डेकार्ट्स की प्रॉपर फिलोसफी जो है ये माइंड एंड बॉडी की, विल बी रीडिंग अबाउट इट, ठीक है, डिटेल में समझेंगे, थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ। माइंड और बॉडी ड्युअलिज्म जो है उन्होंने थ्योरी दी थी, राइट। सो ही सेज दैट रियलिटी हैव लाइक टू सब्सटेंसेस, एक तो हमारे पास में माइंड है, राइट, दैट इज सोल वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सोल, दिस इज फिजिकल थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो अगर हम इस सोल की बात करते हैं और बॉडी की बात करते हैं, राइट, सो व्हाट इट सेज, ही सेज दैट दीज टू आर समवेयर व्हाट कनेक्टेड, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, उनकी फेमस लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, सुनी होगी तुम लोगों ने, है ना, सुनिए कभी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब उन्होंने क्या करा, डेकार्ट्स ने क्या करा कि हर एक चीज जो है, ठीक है, इस संसार में, ठीक है, उन्होंने बोला कि फॉरगेट ईच एंड एवरी फिलॉसफी दैट यू हैव रेड, राइट, डू वन थिंग, सिट डाउन एंड क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। अगर किसी भी चीज पर, किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस पर, राइट, इफ यू कैन रेज वन क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन रेज ऑन देयर एग्जिस्टेंस, राइट, सो इट मींस दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। बट देयर इज वन थिंग व्हिच यू कैन नॉट रेज योर क्वेश्चन ऑन, राइट। सो द क्वेश्चन इज that I'm like thinking about each and everything, right, I'm thinking about this, I'm thinking about that, right. So the question that you cannot raise on is my existence, right. Why? Because I'm thinking, right, and no one can raise questions on my thinking, right. So this is why he gave the concept of I think, therefore I exist. बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, राइट। मेरी थिंकिंग पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, राइट। यू कैन रेज क्वेश्चन ऑन दिस चेयर आल्सो, ऑन योरसेल्फ आल्सो, ऑन योर बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ, ठीक है, तुम उस चीज पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं खुद उस चीज पर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो देयर इज वन थिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, राइट, दैट इज मी, राइट। सो नाउ द बिग प्रॉब्लम अराइजेस दैट हाउ डू सोल एंड बॉडी इंटरैक्ट, राइट। तो ही बेसिकली गिव्स द आंसर ऑफ पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। सप्तऋषि क्या था पाइनियल ग्लैंड वाला सब्सटेंस? Can you talk about that pineal gland is a part of the brain where the mind and body is connected through. Basically, as our mind and body is very much different, as said in body-mind dualism. So as they are different, so to work together, they are connected through the pineal gland that is in our brain. That works as a connector between this physical body and metaphysical soul, the mind. So these things are connected through this part. देखो अब ना उसने बोल दिया कि सोल अलग चीज हो गई, बॉडी अलग चीज हो गई, ठीक है, ये फिजिकल हो गया, राइट, ये हो गया हमारा सोल, ठीक है, माइंड से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये दोनों चीजें अलग अलग है तो इंटरेक्ट कैसे कर रही है, ठीक है, दोनों के बीच में वो इंटरेक्शन कैसे है, वो बेसिकली मैनेजमेंट कैसे है, राइट। सो ही गिव्स अ थ्योरी ऑफ पाइनियल ग्लैंड, राइट। सो व्हाट ही सेज, ही बेसिकली टॉक्स अबाउट कि इफ यू आर डिसाइडिंग टू रेज योर आर्म, ठीक है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मेंटल और सोल, ठीक है, दोनों की मतलब हाथ की तुम्हारी मूवमेंट होगी, राइट। अगर तुम्हें कुछ गरम दिखाई देता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल है, राइट, सो यू विल फील पेन, ठीक है, मतलब मेंटल, ठीक है।
फिजिकल और मेंटल, ठीक है, दोनों यहाँ पर आ गए, राइट. सो क्लियरली व्हाट ही सेज दैट माइंड इज अफेक्टिंग बॉडी, ठीक है. सो बॉडी इज अफेक्टिंग माइंड, ठीक है. सो बट हाउ दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग विद द पाइनल ग्लैंड, राइट. So he said that interaction is happening at the brain, that is, pineal gland that we have, right? So this is the small gland that we are talking about, जो कि brain के center में होता है, ठीक है. So this pineal gland is the one who is making this movement between what? Between mind and body, ठीक है. समझ में आया? अभी बताया मैंने, हाँ, समझ आया? ओके. सो व्हाट एग्जैक्टली ही सेज, बिकॉज डेकार्ट्स ने बोला कि हमारा जो ब्रेन है, राइट, दैट्स पार्ट्स आर लाइक डबल, ठीक है. जो हमारा ब्रेन है ना, उसमें दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट्स हैं, दो डिविजन्स हैं, एक तो लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, ठीक है. ऐसे उसने जो है डिवाइड किया था, राइट. सो व्हाट डिड ही से? दिस स्पाइनल ग्लैंड इज वेरी सिंगल, ठीक है, इसका एक ही स्ट्रक्चर है, राइट, एंड इट इज द वन व्हिच इज बेसिकली मेकिंग दिस कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है. समझ में आया? गॉट इट? चलो, ये बेसिक थ्योरी है, ठीक है. डेकार्ट्स की विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट बुद्धिज्म आल्सो, जैनिज्म आल्सो, डेकार्ट्स आल्सो, ठीक है. सारे फिलोसोफर्स को डिटेल में समझेंगे, बट आई होप कि फिजिकल मतलब बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा. एनी क्वेश्चन यू हैव? कैसा लगा ये पढ़ के? डेकार्ट्स, बिकॉज I'm not able to understand all other philosophers are accepting mind as a part of body, but he is accepting as a part of soul. It is accepting as mind is a soul. But in other philosophy, we consider it as a something external. Like other philosophers include the brain in the concept of body, and they separate soul from body. But he is saying that the mind is the soul. Okay. माइंड क्यों बोला उसने सोल को? क्योंकि बेसिकली वो दो चीजों में डिफाइन करना चाहता है, राइट. इट्स द माइंड हु इज मेकिंग यू डू थिंग्स, राइट. यू आर सिटिंग हियर, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीस कांसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स थ्रू दिस माइंड ओनली, ठीक है. इफ यू आर थिंकिंग, उसकी थ्योरी क्या? आई थिंक देयरफॉर आई एम, राइट. सो देयर इज ओनली वन थिंग दैट ही इज श्योर ऑफ अबाउट हिमसेल्फ. वो खुद के बारे में श्योर है बस, राइट. एंड दैट श्योरिटी इज कमिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम माइंड, राइट. सो दिस इज व्हाई ही इज कंसीडरिंग, ही इज रिलेटिंग दैट कांसेप्ट टू माइंड, ठीक है. इसके बारे में और डिटेल में करेंगे कल, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है, थोड़ा इजी कांसेप्ट के साथ में. समझ में आ गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? श्रीनिधि बच्चा अंडरस्टूड? Yes, ma'am, understood. Okay, चलो, with this we'll end today's class. Thank you. Thank you.